एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. What did we do last time? हमने Tangent. last Tangents and chords. tangents and chord किया था, उसमें मैंने कोई एग्जांपल दिया था? हाँ सर, Yes, sir. y Start. is equal to x square का एक पैराबोला था उसका. अच्छा, do you have doubts in the सर pair of जस्ट lines? स्टार्ट किया था कॉर्ड का, लास्ट डायमीटर किया था. pair of lines की शीट में डाउट है? pair of straight line का जो मैंने भेजा था होमवर्क. Sir, अब तक किया नहीं है. ये करो, ये मैंने इसका काफी अच्छा एक्सरसाइज है वो, बिकॉज ये सर वो फर्स्ट एमटी एरिया आ रहा है ना अभी और टीडब्ल्यूटी भी है परसों. तो एमटी में है ना पेयर ऑफ लाइंस. ओके, let's do one thing. You are continuing with circle, no? Then What? you are continuing with circle, no? Yeah, I'll continue with circles. मैं क्वेश्चन देता हूँ. I hope you've revised the circle वाला part where I've said the equation of tangent कैसे निकालते हैं. Yes, sir. Yes. Yes. ये दोनों करो. Sir, when will we discuss exercise 2B straight lines? That will be in the coming week. Okay. I was hoping to discuss that in the coming week and today pair of lines, but since you haven't done pair of lines, come work. So the week before MT is reserved for doubts, mostly like the 1 or 2 lectures before the MT will be just strictly doubts. Okay. हाँ, first वाला right.
क्या बोलता है उसको, मोहम्मद से आया है, साथ में कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और एक चीज बोलना वाली थी, हम लोग Sir, you're muted. Oh, I was saying that tangent का जो फॉर्मूला है, x स्क्वायर को x(x1) से और y स्क्वायर को y(y1) से रिप्लेस करते हैं और कांस्टेंट को ऐसे ही रहने देते हैं. दिस इज टेंजेंट का इक्वेशन. एंड देन इसमें x1 y1 को पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट एंड सेकंड टेंजेंट इक्वेशन आ गई. और हमें इनके बीच में एंगल भी निकालना है, सो स्लोप से करेंगे इसको. नाउ you can use a tan theta formula, लेकिन यहाँ पे if you observe m1 m2 का प्रोडक्ट -1 आता है तो एंगल 90. ठीक है, you can use m1 m2 not defined आएगा, वो m1 - m2 1 + m2 करें, उससे भी कर सकते हैं. ठीक है, So we got the second one. what Yes, we got the second one. सेकंड वाला देखो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे आता है. इक्वेशन ऑफ सर्कल में x स्क्वायर x(x1) बनेगा, y स्क्वायर y(y1) बनेगा. x बनेगा अरिथमेटिक मीन, y बनता है भी अरिथमेटिक मीन ही बनता है. और x1 y1 को हम क्या लेंगे, ओरिजिन लेंगे, बराबर. because as we are finding tangent at the origin, so basically this becomes 0 + 0 - a so basically what we get is something like this. ठीक है, हाँ हो गया. Yes, sir. ओके, ना अच्छा एक चीज याद रखो इम्पोर्टेंट, ओके, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
when we are using equation of tangent, okay, point x1 y1 must lie on the circle because x1 y1 is point of tangency. So Okay. something I ran into while like revising, like you know how by we can do by dy by dx also. That works for even if it's not on the like equation. So how do we interpret that? Wait. First, let's do one thing at a time. So what I'm trying to say is, suppose we have a circle. I gave you this formula, which is giving you equation of tangent. बराबर? इसमें जो x1 y1 है वो क्या है? वो point of tangency है. Now you can't take x1 y1 to be 100, 100. ये wrong है. Why? Because ये circle को satisfy नहीं करता है. We are saying we are drawing tangent at 100, 100, but 100, 100 कहाँ बाहर है? ठीक है? But x1 y1 को हम लोग 3, 4 ले सकते हैं. Because 3, 4 सर्कल पे lie कर रहा है कि नहीं बताओ? You can, yet this is basically going to be tangent at 3, 4. कभी भी कोई पॉइंट अगर है, अगर ऐसा आता है तो देखना पड़ता है कि ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है, then only you understanding what I'm saying? Is this clear? Yes, sir. ठीक है? Yes, Now, sir. so this is very important. Now the next thing we're going to do is called slope form. अच्छा, स्लोप फॉर्म जो होता है में जो हम रिजल्ट डिराइव करने वाले हैं, दिस रिजल्ट इज आल्सो कॉल्ड कंडीशन फॉर टेंजेंसी. ठीक है? we're going to derive this equation. What is slope form basically? It's basically equation of the tangent in terms of the slope. Okay. Now before I give this long explanation, पहले ये copy कर लो ऊपर part, then we'll. So can you show the question to for the answer again? जल्दी copy करो, screenshot ले लो, एक मिनट, screenshot ले लो जल्दी. Be quick. Done, sir. ये कर लो. सर अभी हम लोग टेंजेंट की अलग अलग टाइप की इक्वेशंस निकाल रहे हैं ना. हाँ. हो गया सर. Done, sir. No, 1 minute. Yes, sir, done. Thank you. हो गया? सर वो जो आपने टिक के बाद क्या लिखा है, टेंजेंट? कहाँ लिखा है? Tangent equation. Now, so let's talk about slope form. Now, before I get into what slope form is, first I'm going to explain to you how slope form is derived. So basically, देखो कभी भी एक straight line और एक circle होता है. There are 3 possible cases. या तो ऐसा हो, या तो टच कर रहा हो, या तो intersect कर रहा हो. So this is out, this is touching, this is intersecting. So case 1, case 2, case 3.
We are more interested in the second case because we're talking about tangent. But we will see nonetheless, we will see the how case 1, case 3 are done. Now, let's say you are given that the circle is a standard circle. X square plus y square is a square. And let's say you are given the line which is y is equal to mx plus c. Now there are 3 ways to solve all of these cases. Like 3 ways to figure out whether the diagram is looking like case 1 or case 2 or case 3. Okay. Can you tell me how can you differentiate by using coordinate geometry between the first case, second case, and third case? Tell me. Sir, in the third one, there will be 2 discrete value, and in the second one, it must be the value must be 0. What must be 0? Sir, the value of y. सर x और y के ये थर्ड वन में 2 पॉइंट आएंगे और इसमें खाली 1 पॉइंट आएगा और इसमें 1 भी नहीं आएगा. Okay, so are you telling me to solve it simultaneously? हाँ सर हम लोग उसको Yes, sir. साइमल्टेनियसली सॉल्व Yes, कर सकते हैं. सर कोई भी So reason basically there are, okay, I said there are 2 methods. Method 1 is, let me write that down here. One second. सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये x square plus y square equals to a square में वो y equals to mx plus c substitute कर देंगे and then वही discriminant. बोल रहा है same thing. सर वो Solving था ना simultaneously. लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, 0 होगा तो टच करेगा लाइन को, एक्सिस को. हाँ वही है discriminant. हाँ वही है. Okay, so basically one approach is solve simultaneously. Simultaneously solve करने से point of intersection आते हैं. तो यहाँ पे no points आ रहे हैं, no roots आएंगे. यहाँ पे 1 point of intersection आएगा, यहाँ पे 2 points आएंगे. बराबर? Now this is one method. The other method is by using PDF. PDF2. Basically PDF से हमें distance मिलता है from the center. बराबर? D लाइन का. अगर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है तो बाहर है, अगर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस है तो टेंजेंट है, अगर ये डिस्टेंस रेडियस से छोटा है तो क्या होगा? अंदर होगा ना. Inside. सो पीडीएफ से भी कर सकते हैं और इसको इंटरसेक्शन से भी कर सकते हैं. हम इंटरसेक्शन से करते हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू इट ओनली बाय मेथड 1. हम लोग क्या करेंगे, सर्कल की जो इक्वेशन है उसमें y is equal to mx plus c में पुट करूंगा, सॉल्व साइमल्टेनियसली, एंड देन इसमें हमें एक बड़ा सा क्वाड्रेटिक आएगा, ऐसे क्वाड्रेटिक आएगा x में. अभी हम बोलेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, which is basically middle term square minus 4 into the ac का product. So you just simplify this. So this is going to be a square 1 plus m square minus c square. ऐसे आएगा डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करने के बाद. ठीक है. नाउ ये अगर तुमने कर दिया तो अभी देखो, फर्स्ट केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो there will be 0 points of intersection because you have imaginary roots. So basically you will have this quantity less than 0. If you have case 2, you have equal roots, d is equal to 0, we have 1 point, और ये तुम्हारा आएगा कंडीशन इक्वल टू 0, ये वाला इंपॉर्टेंट है. एंड केस 3 में आएगा discriminant greater than 0, so we are getting 2 roots, so greater than 0. ये आ रहा है. ठीक है. केस 2 इज इंपॉर्टेंट. तो टेंजेंट वाला कंडीशन, टेंजेंट वाला अपने को ये आ रहा है ना केस 2 में से. वी आर गेटिंग c स्क्वायर इज a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर. बराबर? Yes, sir. So we are getting c is equal to plus minus a into root 1 plus m square. ये इंपॉर्टेंट है.
Okay. Now, ये C की value है. The equation of the line is y is equal to mx plus c. We just found out C की value. So, ये straight line जो आ रही है, क्या है? ये equation of tangent है. In terms of m. ये tangent की equation है, but it is in terms of m. इसीलिए इसको नाम दिया है slope form. Clear है? Yes, sir. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है काफी. ये यहाँ से कॉपी करना शुरू करो. ये ऊपर का किया था ना. हाँ. हो गया? Almost 1 second. Sir, could you zoom in a bit, please?
So here you've substituted the value of y equal to mx plus c because the tangent is a straight line which is cutting that circle, right? What did I substitute? We are finding You intersection points. Yeah, y is That's what equal to mx plus c. we are finding intersection points. How to solve simultaneously two curves. Yes, got it. सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो. सर थोड़ा ऊपर खाली 1 मिनट के लिए. हो गया? Yes. Why are we not using PDF2? I said we can use PDF2, but I'm not using PDF2. If I do one question by so many methods in one class, then we won't be able to do much. PDF2 can be done. I said we can do. It's not that you have to use both. You have to use either one. It's up to you. हो गया सबका? सर आई हैड अ डाउट कि हमें प्लस और माइनस क्यों मिल रहा है? Okay. We'll look at an example. Then we'll understand. प्लस माइनस अलजेब्रा से तो आ रहा है, वो तो बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग सी स्क्वायर ये ऐसा है ना. In terms of geometrically is what you're saying, right? हाँ सर, लाइक उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या I होगा? will take. Okay, ये हो गया. Yes. ये टेंजेंट का ही इक्वेशन है और कहीं लगाना नहीं है. Now, let's take an example. Suppose करो ऐसा है.
वैसा है फाइंड इक्वेशन ऑफ tangents to with slope 2, let's say. So slope 2 है, तो क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, √5। ये ऐसा आएगा m2 है ऑब्वियसली, ये भी √5 ये 5 बन रहा है, सो अपने को दो टेंजेंट्स मिल रहे हैं. Why are we getting two tangents? Now you tell me. सर दोनों मतलब Sir, two डायमेट्रिकली parallel अपोजिट हो tangents, गए no? ना. Slope 2 वाले दो tangents नहीं No, होंगे? like the two parallel tangents. हाँ सर, Sorry, डायमेट्रिकली sorry. अपोजिट. Parallel हो सकता है Diametrically दो opposite tangent. points. हाँ, diametrically opposite points होंगे. ठीक है. अच्छा, इसमें एक एडिशनल नोट है कि ये मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, ये बस ऐसी है कि इफ द सर्कल इज नॉन स्टैंडर्ड बोले तो मतलब जिसका सेंटर रेडियस फॉर्म इस तरह से दिया है, सेंटर रेडियस मालूम है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म विल बी समथिंग लाइक दिस. जैसे ये हमने जो ये इक्वेशन डिराइव किया ऊपर यहाँ पे, वही उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, स्लाइट मॉडिफिकेशन. इंस्टेड ऑफ y we will have y minus k, instead of x we have x minus h. Do you understand the modification that we are doing to the equation? Can you compare the equations and see? जैसे सर्कल के इक्वेशन में फर्क है ना यहाँ पे और ऐसे, सेंटर अगर डिफरेंट हो, स्टैंडर्ड नहीं हो, उसी तरह टेंजेंट के इक्वेशन में भी वही मॉडिफिकेशन है यहाँ पे इस तरह से. So we're not deriving it, मेथड तो सेम ही है, बट इट्स जस्ट दैट वो वैसे आता है. Is this clear? यस सर. ठीक है, ये कर लेना कॉपी. Give you some questions based on this. So which is the plus and which is the minus? That you can't say. वो एग्जैक्ट डायग्राम बनाना पड़ेगा उसके लिए. सर बट इंट्यूटिवली तो बोल सकते हैं ना प्लस वाला ऊपर वाला होगा. वो तो एक डायग्राम बना के मैं एग्जैक्ट बनाऊंगा, तो लेट्स नॉट गेट टू, इट्स नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट. ठीक है, डायग्राम बनाओगे तो दिख जाएगा. सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा. हाँ, तो थोड़ा ऊपर दिखा सकते हैं.
डन सर। हो गया? यस। Now, let's have a look at this. Okay. Okay, look at this question. Find equation of tangents to the circle which pass through 5, 0. Oh, sorry, which pass through 5, 2. Okay, tell me one thing. Is this point 5, 2 the point of tangency? No, sir. नो। It's not. It's not mentioned ki find tangent at 5, 2. It is the tangent is passing through 5, 2, but we don't. Okay, 5, 2 circle के बाहर है अंदर है? It's outside the circle. आउटसाइड। Outside. बाहर। बाहर है। पॉइंट ऐसा है, टेंजेंट्स यहाँ पे 2 बनेंगे ना? ओके, अच्छा अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन की शक्ल ऐसी होगी, Yes. यानी ये तो अपना 5 हुआ ना, ठीक है। अब इसमें बोलेंगे कि ये टेंजेंट लाइन जो है 5, 2 इसको करेगा क्या? सेटिस्फाई? डालो Yes. उसमें। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए ऑब्वियसली स्क्वायर करेंगे, अच्छा स्क्वायर जब करेंगे so we will say 25, all these calculations. So y equals to 2 we'll have to put like 2 equal to 5 and plus minus 5 root. Yes, on the one. 1 plus and square. Okay, so यहाँ पे okay. Okay, now what's happening here is that m square term is getting cut. We end up with minus 21 is equal to 20m. So m is basically what? Minus 21 by 20. Okay. Now I have to ask you a question. See 5, 2 अगर मैं exact diagram बनाता हूँ, this point is somewhere here. The circle का radius 5 origin है, ये 5 एक्सिस पे, y एक्सिस है, तो 5, 2 डायरेक्टली इसके ऊपर आता है और हमें ये टेंजेंट मिला है, लेकिन हमें पता है 2 टेंजेंट होने चाहिए ना, हमें पता है 2 टेंजेंट बाहर वाले Yes, पॉइंट से sir. एक और टेंजेंट पास नहीं करेगा, Yes, sir, करेगा. करेगा ना? अब Yes, मुझे sir. बताओ, Yes, sir. ये दूसरा टेंजेंट अपने को आया है नहीं, हमने तो सॉल्व किया, तो ये क्या चक्कर है? ये दूसरा टेंजेंट भी तो आना चाहिए ना ऐसे। Because m is undefined for second tangent. Right, that is correct. If you see the diagram, actually मैंने क्या बोला था कि पॉइंट जो है
It is like just above डायरेक्ट this. ऊपर. हाँ, Straight line. तो ये जो टेंजेंट होगी वो ऐसे होगी ना. हमने हमने स्लोप फॉर्म यूज किया टू गेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. अब स्लोप फॉर्म से जो हमने सोल्यूशन निकाला वो तो वही सोल्यूशन आएंगे जिसमें स्लोप डिफाइंड हो, राइट. अगर स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, अगर अगर कोई क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है, ये वर्टिकल लाइन है 5,2 से पास कर रही है, तो ये x इक्वल टू 2 वाली वर्टिकल लाइन होती है. लेकिन x इक्वल टू 2, चलो इक्वेशन तो ढंग की है, लेकिन इसका जो स्लोप है वो नॉट डिफाइंड है. आई बात समझ में? Yes, ठीक sir. है. इफ वी आर यूजिंग स्लोप फॉर्म, मैं इसको लिखने वाला हूं जो मैं अभी बोल रहा हूं. इफ वी आर यूजिंग स्लोप फॉर्म, then only those answers will come where the slope is defined. समझ रहे हो? अगर स्लोप नॉट डिफाइंड होगा तो उसको हम स्लोप फॉर्म से नहीं निकाल सकते. ओके. And the way around this is that we should be aware of the fact कि ये पॉइंट बाहर है, बाहर से दो टेंजेंट बनेंगे. हमें एक आंसर क्यों आ रहा है? तो दाल में कुछ काला है. And therefore, by looking at the diagram, we are seeing that there are two tangents, and we are getting the second tangent by just by observation. समझ में आ रहा है? So इसका मतलब है कि हमें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. So the important thing here is that if we use slope form, the answers we get are only those tangents whose slopes are defined. आई बात समझ में? मतलब अगर तुम कोई इक्वेशन सॉल्व करोगे, सॉल्व जब करोगे तो स्लोप की वैल्यू तो डिफाइंड ही आएगी ना. तुमने कभी ऐसा कोई इक्वेशन देखा है m-5 इंटू m माइनस नॉट डिफाइंड? ऐसा कभी तुमको आया है लाइफ में कभी? No, sir. m इज आइदर 5 और नॉट डिफाइंड. ऐसा कभी आता है? ऐसा कभी आएगा ही नहीं तुम्हारी लाइफ में. ये वाला पार्ट तो स्पेशली आएगा ही नहीं. m इक्वल टू 5 आएगा, तुमको ये दूसरा वाला नहीं आएगा. सो देन यू हैव टू प्ले डिटेक्टिव. अच्छा, लाइन वर्टिकल हो सकती है, समझ रहे हो? लाइन वर्टिकल है और लाइन वर्ट और हाउ डू वी नो that we are missing a solution? How do we know that we are supposed to get only one answer or two answers? समझ रहे हो? So एक मिनट, हैंग हो गया है. वो तभी पॉसिबल है जब हमें पता है कि डायग्राम कैसा है और बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट बनेंगे. दो आंसर आने चाहिए, एक क्यों आ रहा है? यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. एक मिनट, हैंग क्यों हो गया? आई नीड टू जस्ट रीस्टार्ट दिस वंस. गिव मी 2 minutes. This is clear? ऐसा कभी आने वाला नहीं है. Do one thing, इसको कॉपी करो एग्जाम्पल को. So, sir, here that point 5 comma 2 does not lie on the circle, right? No, it does not. If And the sir, point 5 comma 2 lies on the circle, then we will not use the slope form. Then we will use the first wala form, no, Cartesian form, because direct uska formula hai na. There is no हाँ, solving involved at all. So won't it be x equal to 5? No, wait, what's it? The Oh, line hi. with X, x yeah, it equal to should be 5. x equal to 5.
Yeah, it x equal to 5. Whenever we like in this case also we had to get two equations, right? But we got only one answer. So in that Yeah. case, we will say that the slope is not defined for the second case. Correct. Yes, yes. That is exactly what you are supposed to do. And so whenever the slope is not defined, we are going to use the first formula. Right? What first formula? The before one Cartesian answer. I didn't say that. Who said that? If it was on the circle, then we would have used I said, yeah. सर नीचे स्क्रॉल करो ना. Yeah. सर वो नीचे का दिखाना नोट इफ वी वाला. हो गया.
Yes. Yes, sir. Okay. So once again, can you show the two lines on top? The what? Yes, sir, done, sir. So it's a new question, okay? Try करना है. So this heavily relies on straight lines, okay? Remember non-standard circle का मैंने क्या बोला था वो use कर सकते हैं. एक मिनट. ये नॉन स्टैंडर्ड का बोला है, ये शिफ्टेड वाला जो है. So what are we written after 5 equals to 0? Where? So in the second question, Which are parallel to.
फर्स्ट हो गया? Sir, 1 minute. First one touches it more than once. It looks like. It looks like a second line. हो सकता है, एक मिनट। Okay. Now, how do you prove the it touches? दो तरीके हैं, एक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ही आ रहा है। एक प्रूव कर सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, ये भी बोला था मैंने, ये वाला, ये देखो पीडीएफ से भी कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। स्लोप फॉर्म से कंपेयर कर, स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हो, लेकिन बेसिकली व्हाट वी कैन डू, स्लोप फॉर्म से कैसे करेंगे कि ये लाइन का स्लोप 3/4 है। सर लाइक आप पीडीएफ से एक बार करके दिखा सकते हो क्या? एक, हाँ हाँ, मैं sir. बता रहा हूँ, जो जो स्लोप इक्वल टू 3/4 वाली लाइन है, उसको स्लोप फॉर्म के में डालेंगे। Yes, sir, and we'll get the value of So C. then you will get the tangents, and you have to prove that one of the tangents is this given line. Yes, sir. Right? You can do that. पीडीएफ से बहुत आसान है। सेंटर बताओ क्या है इसका, सेंटर इस सर्कल का क्या है? नेगेटिव आधा, 1, -2। रेडियस इज बेसिकली g² + f², एक्चुअली कांस्टेंट टर्म है ना, इसको सही है।
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी √6 आ रहा है। नाउ ये लाइन जो है हमारा 3x माइनस 4y इक्वल -1 इज 0 है। हम पीडीएफ अगर यूज करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड द लाइन, तो देखते हैं क्या आता है। Why are we getting this? हाँ सर, तो एक्चुअली ये टैंजेंट नहीं है सर, Yes, सीकेंट sir, है it's वो। not tangent, it's secant. हाँ सर। It doesn't like ग्राफ भी yeah. उसका वैसा ही आ रहा है। Oh सर yeah. tangent 3x minus 4y equals 6 है और 3x minus 4y equals 16 है। एक मिनट, ये 3 + 8 11 है, 10 आ रहा है ना, 2 आ रहा है ये डिस्टेंस। आई थिंक या तो मैंने सर्कल का इक्वेशन में मैंने ये +1 होना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि अगर ये +1 होता तो ये 2 आता, समझ रहे हो? यस एक सर। काम करो, एक काम करो, इसलिए टेंजेंट नहीं है। एक काम करो, इसको है ना +1 लिख दो, क्योंकि बिकॉज देन द फॉलोअप क्वेश्चन बिकम्स यूजलेस। फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, बराबर? सर +1 से भी 2 ही आ रहे हैं। नहीं नहीं, 2 आने दो, चलेगा ना। तो ये तो बराबर आ रहा है, नहीं 2, उसमें से एक टेंजेंट तो ये होना चाहिए गिवन लाइन। डिस्टेंस 2 आ रहा है ना, अभी मैच कर रहा है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज रेडियस ना, तो प्रूफ तो हो गया ना कि टेंजेंट है। No, after you do +1, then it is only one. It is correct then. देन It इट इज is करेक्ट। touching. अरे It दो is touching. टेंजेंट आने तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता है, पैरेलल टेंजेंट्स आएंगी, एक उसमें से एक No, हमारा sir. He होगा। was saying that it's still intersecting at 2 points. But no, What? no, it's not. No, 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 it is It's not not going to anymore. intersect at 2 points. It's not anymore. कौन बोला it is intersecting at 2 points? No, no, no. टेंजेंट है He ये। was. He was saying that it is still intersecting at 2 points even after doing -1 to +1. But I checked नहीं it नहीं, isn't. wrong, that's wrong, that's wrong। अब d = r हो गया, अभी की पॉइंट हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर आपने कौन से इक्वेशन में चेंज किया, एक बार दिखा सकते हो क्या? क्या चीज? आपने दो में से एक इक्वेशन में कुछ तो चेंज किया है ना? कौन सा इक्वेशन? सर्कल के इक्वेशन में +1 कर दिया। खाली वो ब्लू, ये जो ब्लू दिख रहा है ना, +1 कर दिया, वो चेंज किया, -1 का +1 किया। सब प्रूव करने के लिए आपने पहला मेथड कौन सा बोला? प्रूफ करने के वो लिए स्लोप निकाल के इसमें डालने का, स्लोप फॉर्म में। अच्छा, वैसे तो मैंने खाली पीडीएफ से किया, बट यू कैन डू इट विद स्लोप फॉर्म आल्सो। स्लोप फॉर्म निकालो विद स्लोप 3/4, लेकिन उसके लिए ये देखो, ये नॉन स्टैंडर्ड सर्कल है, सेंटर इसका क्या है, यस रेडियस सर। इसका क्या है, ये पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर स्लोप तो थोड़ा फॉर्म जो है लंबा हो इसका, जाता है वो। ये ऐसे आता है, देखो ये कॉपी पेस्ट करूंगा, एक मिनट, ये अपने को लिखना पड़ेगा। ये देखो समझो, मैंने ये कर लिया। अभी इसमें स्लोप हमारा 3/4 है, बराबर। के अपना सेंटर का -2, तो y + 2 आएगा,
स्लोप 3/4 है, ये x plus x minus 1 आएगा। सेंटर 1, ये रेडियस 2 है, सही है ना। ये अपने को लाइन की इक्वेशन आएगी जो कि गारंटीड टेंजेंट है, और फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 8y, सॉरी, ए आपको 2 कैसे आया? क्या लिया है उसको? क्या ए का A is the वैल्यू? radius. ओके। basically we'll get something like this. 4y is equal to 3x minus 11 plus minus 10, ऐसे आ रहा है, which means we are getting 4y is equal to 3x minus 1 और minus 21। आई बात समझ में? हाँ सर। Yes. Which is one of the lines which you want, 3x minus 4y is 1, correct? ये वाला सही है। So that proves कि ये tangent की जो given line है वो tangent है। Yes, because ये slope Yes, form sir. से हमने निकाला, ये हमने slope form से निकाला। You can now you have to find the point of tangency also, so you need to do that as well. सो हाँ, सो यहाँ पे आपने जब PDF 2 अप्लाई किया है और लाइक इन द स्टार्टिंग देयर in the formula you substituted the center के coordinates, right? That 3 into 1 minus 4 into minus 2. हाँ, हाँ। पर सर मुझे उसका लॉजिक नहीं समझा, लाइक दैट विल गिव अस द डिस्टेंस। PDF2 से क्या कर रहे हैं हम? फर्स्ट यूनिट तो आज को सर की क्यों लगा रहा हूँ PDF2 लगाने की का रीजन क्या है? Why are we doing this? I think So it's to because find we should get that D should be equal to R only, then we What will is be D? able What to is D then? What is D? the distance of the line From what? center. That answers your question. Okay.
Okay, how do you get the point of tangency? Tell me. How do you get the point of tangency? So we can सर find सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड में. फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड में मतलब तुमने सर्कल और लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया. यस सर. अच्छा, इससे अच्छा एक काम करो ना, फुट ऑफ we can find. परपेंडिकुलर फॉर्म में लगाओ Yes, sir. सेंटर से. टेंजेंट पे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ना. Yes, sir. फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाता है, सेंटर इज 1, -2. सो बेसिकली ऐसा फॉर्मूला होता है ना, चेंज इन एक्स चेंज इन वाई. यहाँ पे इसको लिखेंगे 3x - 4y - 1 is 0. नीचे यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा. फिर 1, -2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें. नीचे आएगा 3² + 4², राइट. सब कुछ आता है ना, बड़ा सा फॉर्मूला. Yes, sir. ओके, इज इक्वल टू 10/25 minus 10/25 बोले तो -2/5. x - 1 is basically -6/5 and y + 2 is 8/5. So x की जो वैल्यू आती है वो -1/5 आती है और y की जो वैल्यू आती है 8/5 - 2 is -2/5. So contact point is basically this. Okay, ये कर लो कॉपी. So can you scroll slightly up? यहाँ पे अच्छा नहीं सर, हो गया.
सर सेकंड का आंसर आपने ओके, आई होप सबने कॉपी कर दिया ये पार्ट, कर दिया नहीं किया? हाँ सर सही हो गया ये कॉपी करके सर हाँ हो गया। यस सर हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट सर। इसे सेम थिंग, खाली इसमें स्लोप दे रखा है। यस सर। m की वैल्यू 1/3 दे रखी है, बराबर। -4x + 3। ये सर्कल का सेंटर क्या है? 2, -1 है। रेडियस 2, क्या है? -√10। √10 है। सो इक्वेशन ऑफ और स्लोप 1/3 है ना। हाँ So सर। equation of tangent is going to be y minus k is m x minus h मतलब actually 2 plus minus radius into 1 plus 1/9. So 3y plus 3 ठीक है। यस सर होगा। You can use SL only. Those of you who haven't done it, please copy.
Huh. Second sum can be how to use it? What does that mean? Don't suggest. The second sum you can do, but don't. It can be done by PDF, but PDF is very lengthy compared to not parallel. हमारा नहीं, second वाला Parallel लिया का था, बस slope जो मैंने आएगा. आपको रुकवा के लिया था. थर्ड वाला लिया और Okay, now ये हो गया. Sir हो गया. Uh, Giving you more questions to try. This is to see if you've revised last time notes also. SL learning में सारे subjective question है और एक भी solved नहीं है. So you're and the questions, so most likely it's like trying to do exercise 3 without having the solutions or anything like that, or even the answer. हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पे ऐसा क्वेश्चन किया था एल क्यू बार अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसा. Yes, sir. हाँ सर. पिछले बार. ठीक है. Okay, just try this question. It's a very short question, and then we'll move to the next concept.
Huh. Yeah, 0, correct. How do you get this? Sir, length of the tangent is root of power of the point. Correct. Length of tangent is root of power. Okay. So length of tangent, abhi length of tangent to the first circle is twice length of tangent to second circle. Point FG hai, power will be root of power with respect to the first circle 2 times root of power with respect to second circle. Correct. ठीक है, इसको फिर स्क्वायर करना पड़ेगा. So then we get 0 is equal to and then of course you will have to divide this by 3 and we get this. Okay. सर वो 12F होगा ना 2F या क्या? हाँ 12. हो गया सर. हो गया? Okay, now we're going to do something which is very weird. It's called chord of contact. It's weird and it's very important, so pay attention. Now watch this. Suppose I have a circle. For now we're just going to assume standard circle. We have a point x1 y1. From here we are trying to draw two tangents P and PB. A and B are the contact points. What do you think is the chord of contact mean? What is chord of contact? AB है क्या वो? Correct. Tangents को Chord join of करना है. contact would be the chord which is joining the contact points. So this is called chord of contact.
So हमें इसका इक्वेशन निकालना है. Now I'm going to make a very weird claim, and the claim is that the formula for chord of contact is same as that of tangent. Okay, and this is something that actually confuses people a lot. This is what we are going to prove now. Okay, बहुत अजीब लगेगा, but just hold on. But our aim is to find the equation of this chord. Now tell me, obviously I don't know what A and B are, so I'm going to make assumptions. I'm going to assume that A is x2 y2, and I am going to assume that B is x3 y3. Remember, x2 y2 and x3 y3 are assumptions, which means Collinear. आंसर उनके टर्म्स में नहीं आए. हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में? x1 y. हमें बाहर वाला पॉइंट दिया है. Yes, sir. मतलब है हमें जो आंसर आएगा वो बाहर वाले पॉइंट्स के पॉइंट के टर्म्स में आना चाहिए. यस, ओके ओके. नाउ एक बात बताओ, PA is a tangent, right? PA is a tangent. What is the point of tangency? x2 y. A. Yeah, point of tangency is x2 y2, which is A. Now एक बात बताओ, if you know the circle equation and you know point of tangency, can you find the equation of the tangent? Yes, sir. Yes, So what sir. is the equation of PA? Now how do you do that? You use the Cartesian form. Yes, sir. Use the first form because you know the point only itself. Acha, but instead of x1 y1, what should we use x1 y1? Like Cartesian form क्या होता है? x1 plus y1, and then the constant term is a square. So should we use x1 y1 as the point of tangency, or should we use x2 y2 as the point of tangency? So shouldn't it be like this? Because point of tangency is taken as the point, right? So it should be x2 y2, no? Yes, Do you agree with this? Yes, sir. Similarly, can we say that equation of PB, because the point of tangency is now B, this will be the equation? Because it's not going to be P. मैंने तुमको इंपॉर्टेंट नोट बोला था कि जो x1 y1 जो हम लेते हैं वो सर्कल पे लाई करना चाहिए. ठीक है, so x3 y3 is the point of tangency which lies on the circle, so I'm going to use that. तो PA and PB का इक्वेशन आ रहा है अपने को, yes or no? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Keep in mind x2 y2 x3 y3 हमारे assumptions है, ये अननोन, ये मतलब हमें इनके टर्म्स में आंसर नहीं निकालना है. अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि x1 y1 satisfies both these equations? Yes, sir. P obviously P PA का इक्वेशन करेगा satisfy, P PB का भी इक्वेशन करेगा satisfy. दोनों tangents पे lie करता है ना P, tangent number 1 and tangent number 2. So x1 y1 इन दोनों इक्वेशंस को क्या करता है? satisfy. So हम क्या करेंगे? इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. x1 x2 plus y1 y2 is a square. Similarly, x1 x3 y1 y3 is also a square. सही है? We're getting these two equations now. Okay. Now,
consider a new equation x1 plus y1 is a square. Okay. Look at the last line. Consider a new equation. ये कहां से आया पूछो, क्योंकि ये डेरिवेशन है, ठीक है? बस ये देखो ये इक्वेशन. Is it different from these two equations? इनसे अलग है कि नहीं? Yes, sir. So it's a completely different new line, brand new line है. कहीं से तो आया ही है. Yes or no? Yes. Okay. Okay. But ये brand new line है. So this is a brand new line. But line है ना, linear equation तो है ही. Now my question to you is number one. Does x2 y2 satisfy it? Does x2 y2 satisfy it? Yes, sir. Yes, sir. How do you know? Yes, sir. How do you Because know? it's on Because the chord. A is on the chord. How do you know this is chord? बोला थोड़ी ये chord है. मैंने किसने बोला ये chord? हमने तो बस बोला ये ब्रांड न्यू लाइन को देखो, कहीं से तो आया ही, पता नहीं कहां से. अब ये अननोन लाइन है, ये पता नहीं इसके बारे में. मैं पूछ रहा हूँ क्या x2 y2 उसको करता है सब? Yes, sir. From equation 1. हाँ, ये इक्वेशन से करता है. कर रहा है, देखो x2 y2 डालेंगे वही आ रहा है ना, इक्वेशन 1 से आ रहा है. So this is from equation 1. Does x3 y3 satisfy it? yes, sir. Yes, sir. Equation. y3 डालेंगे तो इक्वेशन 2 आ रही है. इसका मतलब है a एंड b स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करते हैं. इसका मतलब ये है कि द न्यू लाइन इज इक्वेशन ऑफ ए बी. मतलब क्लियरली अगर ये ए से पास कर रहा है और बी से पास कर रहा है, तो ये ए बी का ही इक्वेशन हुआ. और किसका हो सकता है? सर तो ये आपने ऑब्जर्वेशन से लाया ना न्यू लाइन. ये ऑब्जर्व, अभी इसको तुम छोड़ो, ये आया कैसे? यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गेट दिस, यू आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, ये आया कहां से, हम कैसे सोचेंगे? अभी डेरिवेशन है, इसको फिलहाल इसको छोड़ दो. जस्ट समझ में आया ये नया इक्वेशन आया, कैसे आया, कहाँ आया, बस है ये इक्वेशन. क्या इसको ए करता है, क्या इसको बी करता है? तुम्हारा प्रॉब्लम यहाँ पर है. आई यू अंडरस्टैंडिंग? ओके. फ्रॉम द इक्वेशंस वी गॉट, इज इट क्लियर कि ये ए और बी दोनों से पास कर रहे हैं? Yes, sir. तो इसका मतलब ए बी का इक्वेशन हुआ. ठीक है. नाउ द स्ट्रेंज थिंग इज this equation that you see over here looks exactly like the what? Tangent or Cartesian. Looks exactly like the tangent to A. Formula for chord of contact is the same as that of tangent. But there's one key difference. There's one key difference. Can you tell me what? Can you spot the difference? One is x1 and y1 and the other is x. Sorry, one is x2 and y2 and the other is x and y. No. I'm talking about the formula for chord of contact and the formula for tangent. They look exactly the same. There's one key difference. X and y are variable. वो तो वेरिएबल होती है लाइन में, तो x and y तो वेरिएबल ही होते हैं. Between equation 1 and this new equation, no? Equation of chord is in Slope terms अलग है, of the slope. equation of tangent. See, x2 y2 का कोई मतलब नहीं है. Outside of the question, let's say Slope will be different. if we are looking at the formula for chord of contact, suppose मैंने बस ये लाइन लिखा, chord of contact का फॉर्मूला ये है, और कोई दूसरा बच्चा देखेगा अच्छा तो tangent का भी फॉर्मूला यही है. Forget about all what we did in this question. X1, Y1 lies outside the circle and all Correct, the other. very good. हाँ.
x1 y1 is not lying on the circle. x1 y1 is lying outside the circle. Okay, which means let's say I give you two examples over here. Let's say this is x square plus y square is equal to 10. Now x1 plus y1 minus 10 equal to 0. ये फॉर्मूला किसका है? टेंजेंट का है. Yes or no? Yes, sir. Okay. लेकिन अगर मैंने x1 y1 को let's say 3,1 लिया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन आएगी. 3x plus y minus 10 is 0. Does 3,1 lie on the circle? Yes, sir. So if 3,1 lies on the circle, this represents tangent. Now let's say the same circle, okay, and the same formula, but I take a point x1 y1 to be 5,3. If I take 5,3, I get a straight line. I get a line, but this line is not tangent. The reason being this point 5,3 is from the outside. So we apply the tangent formula to that point even though it's not on the circle. Yeah, so what we are doing chord. is we are applying tangent formula to a point which is not on the circle. And when we do that, we don't get tangent in the process. In the process, we end up getting the equation of the chord of contact. So ये है chord का equation. Okay, so x1 y, if you want the tangent equation, you need to substitute the point on the circle. If you want chord of contact equation, you will have to substitute a point, the point जहां से tangents बना रहे हो. So 5,3 is clearly outside the circle. 5,3 डालेंगे तो जो line आएगी वो chord of contact की equation होगी. The formula दोनों का same है. So the point x1 y1 that you substitute is completely changing the whole landscape of the geometry that is happening. You understanding what I'm saying? Yes. What you put in the x1 y1 decides whether it's going to be tangent or whether it's going to be chord. समझ रहे हो? Because दोनों का formula same है. So what x1 y1 you choose is the deciding factor. Is this clear? So what if you chose a point inside the circle? Would it still be that a will chord? come to later on. That will come to that. अभी वो अभी नहीं है. उसके we'll talk about that. ठीक है? Now first ये copy करो ये derivation. I think it's time up already. So there are 2 minutes. So I understood that end part, but you said that you substituted 3 and 1, but then like where did you get 5 and 3 from in that second case? I Taken a new points like 3 and 1 when we just substituted. considered 5,3 as an external point. वो तो मैंने दिया है question में. Oh, okay, sorry. सर आप नोट्स भेज दो ना हम लोग तभी कॉपी कर लेंगे. Done, sir. हो गया? हो गया ना सर. तो आगे और कुछ करा रहे हो? नहीं. सर नोट्स भेजना ना. So I just had one doubt कि like हम जो AP है Okay, ना, so एक मिनट मेरी आवाज बहुत कम आ रही है. I cannot hear. Sir, can you scroll down for 2 seconds? If you have understood everything, then I'll just send you the notes. However, if you have a doubt related to this part, you can ask before leaving. Can you scroll down for 2 seconds? Yeah, just a moment. But people just need to just see if there's anything that's okay.
पीडीएफ भेज दिया है, थोड़ा एक आध मिनट में आ जाएगा. Just check it out. How you got that 5,3 lies outside the circle? How do you get that any point lies outside the circle or inside the circle? Power. Power से ना. सर हमें जो फिर अभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन मिला वो सर्कल को सेटिस्फाई करेगा ना 2 पॉइंट्स पे. If you solve the chord of contact and the circle simultaneously, you will get two roots, which will be Okay, A sir. and B के points. Okay, sir, understood. I gave random value 5,3, but 5,3 is pretty obvious कि वो power उसका positive है, so that's why x square इसका 25 आ रहा है, तो 10 से तो बड़ा ही है. हो गया. सर हाँ. सर आपने वो किया है ना PA और PB का, that PA is a tangent, like I'm not really understanding that part properly. A is tangent, B is tangent. Yes sir, so then like like after you substituted that value x1 comma y1 in it, like what do we have to do with that? In what? Here. Yes sir, like you've written it satisfies both these equations, like So I substituted x1 y1 in it. Yes. So ये yeah. equation आया ना अपने. हाँ सर, तो फिर like satisfies का मतलब what did we have to get that we know it satisfies it? We just substitute, we get an equation. इसको hold पे रखो अभी. आया कि नहीं आया? आया है ना? कुछ तो आया अपने को. वो अभी नीचे काम आने वाला है ना. ये आर्ग्यूमेंट्स में काम आएगा ना. वो आया है, उसको हम होल्ड पे रख रहे हैं और फिर then that is the answer to the question in the next page that I've asked you. Yes sir, so like there also you've written that only, that does x2 comma y2 satisfy it. So like This is a satisfy. completely new equation. एक मिनट, don't confuse this with the previous two. ये इसमें Yeah. x2 y2 है, ये x3 y3 वाला है. ये x1 y1 वाला लाइन, ये एक completely new line है. And हाँ. हमने फिर because we have equation 1, it's very easy to see that x2 y2 इस लाइन को करेगा satisfy. क्योंकि क्योंकि हमें x2 तीन y2 equation- सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 1 आ रही है जो हमने प्रूव किया है. Okay. So because like just by looking both lines, like both points satisfy it, and it's a line, it has to be the chord line. Sir, you are inaudible if you're saying something. No, I'm not saying anything. I'm just Okay. हो गया तो बस we can leave. I'm just waiting. If anybody has any doubts, you can ask. Otherwise, like, it's fine. So when we considered the new equation, like because like just by looking both the points satisfied, and because it's a line, it has to be the chord line. No? Yeah, it has to be the chord. And like from looking at it, it also looks like the tangent line. So that's what. So that's why we got it. Huh.
I'll be taking doubts of straight line, anything related to MT, straight lines or whatever. Take a next. Chalo. Thank you, sir. Yeah.